Group discussion is a very important activity, guys. ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. ग्रामर इंप्रूव करना, उसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस बोलकर इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना. इंग्लिश सेंटेंसेस को सेपरेटली घर पे यदि आपने अभ्यास कर लिया, लेकिन पब्लिक के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस सबको नहीं आता है. क्यों नहीं आता? क्योंकि पब्लिक के सामने बोलने के लिए पहले आपको एक अच्छा खासा ग्रुप डिस्कशन का एक्सपीरियंस चाहिए. और ग्रुप डिस्कशन में जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बोलने का फ्लो इंप्रूव होता है. हमारे टाइटेनियम उदयपुर में एवरी संडे हम लोग ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेड प्लेटफॉर्म भी हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है. मजे की बात यह है कि हमारे पास दोनों ही अच्छे स्पीकर मिस्टर हर्ष एंड मिस्टर साहिल. बड़ी गजब की फाइट होती है. आपने पुराने कई सारे वीडियोस आपके देखे भी होंगे. आज मैं आपके समक्ष, चूंकि दे बोथ आर वेरी गुड स्पीकर, तो मैं आपके समक्ष इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जीडी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बोलते हैं. तो आप भी कुछ आइडियाज़ लें और आप भी अपने आसपास स्कूल कॉलेजेस जहाँ आप पढ़ रहे हो या जहाँ आप रह रहे हो उनके साथ ऐसा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने का कोशिश करें. सो साहिल, फर्स्ट हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करते? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि ग्रामर सीख लिया एंड दैट्स इनफ, बट जीडी में अच्छा बोलने के लिए पहले एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है. सो हाउ डू यू प्रिपेयर? So the thing is how I prepared about the topic. First, we got the topic in the group, right? Okay. So today's topic was what derives to the progress. Is it innovation or the invention? First of all, the main thing is the most important thing about is understanding the topic very much. If you understand the topic properly, you can research about the topic, you can dive into the topic. So first, the understanding of the topic is very important. After that, I go to ChatGPT, Google, I read some news articles, and I develop a basic understanding in myself. So what is happening, what's going around the world. Okay, so point number one, guys, you must note down कि you must have good understanding about the topic. अमूमन छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, एनीवन कैन डिस्कस. लेकिन आज का जो टॉपिक जैसे हमने डिस्कस किया संडे को, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. टॉपिक को आप समझिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, गूगल हुआ, चैट जीपीटी हुआ, आजकल तो बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म से आप टॉपिक को डीप में समझिए, उसके बारे में डेटा फैक्ट्स इकट्ठा करिए. ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, Then as I said, I go to various platforms like Google, Google Chat GPT. I research about the topic. I absorb as much as I can from the platforms information. I took the dates, the events happened. So what I do is I develop an understanding in my mind and I note down the important events. Like if I talk about Iran and Israel war, what would I do if I have to research on the topic? I go to the Chat GPT, Google, and if needed, I will watch some YouTube videos to get an understanding of what is happening geographically. After that, I'll write down the key events happening there. So it will give me a good understanding of the topic, and that's how I research about the topic. Okay. So once you research, it means you have knowledge, you have data facts, you can communicate, you can express your views. So most of the people when they discuss GD, they speak few lines, and some people I have seen that उनको लगता नहीं बिना तैयारी के मैं थोड़ा बहुत बोल लूँगा. लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, यदि आपको बेहतरीन प्रदर्शन देना है तो साहिल सजेस्टेड वेरी नाइस, आप वेरियस प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए एंड देन पार्टिसिपेट इन डिबेट. सो हर्ष, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन डिबेट एंड GD? Asking the questions by the people is the thing which gives me kick, and that's the only kick that I enjoy. And I praise the question which are asked by the people. I enjoy asking, let the people ask me more and more questions. It provides me the confidence to say the words which I know in front of public. Even if there are hundreds of people sitting in me, and if one person stands and asks me the question, I am ready to dedicate the whole knowledge which I have to that question. राइट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जैसे एक स्पीकर ने बोला है, अपने व्यूज रखे, एंड देन नाउ नेक्स्ट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज आस्किंग द क्वेश्चन. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, इट मीन्स वन थिंग, यू लिसन द कॉन्वर्सेशन वेरी केयरफुली एंड यू जनरेटेड द क्वेश्चन. सुनते वक्त ही आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो गया, डेटा को आप इधर उधर करने लगे, मुझे ये पूछना है, एंड वंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, अब क्या होगा, जो डिस्कशन है वो ट्रिगर हो गया, वो डिस्कशन अब लंबा चलेगा. ही विल आस्क द क्वेश्चन, he will reply, again he will put up the question, he will reply. So this is the way to have a wonderful group discussion. And this also improves my critical thinking.
Okay. That which points I have to say in front of public and which point I have to suppress. Okay. Which point I don't have to convey to the public. So Okay. that all things goes in my mind, and then I try to deliver the best which I have in my mind. Okay. So discussion has a lot of benefits. Critical thinking, analytical skills, right? Even sometimes people learn the diplomatic skills also. What should be spoken, what should be hidden, right? It also improves the observation skills of a person. Like if you are hearing the person, you have to give your all ears, like Okay. what the person is saying. You have to develop a question. Okay. So by doing this, your observation skills will be sharpened. Okay. And develop you should a also know what not to speak in front of public. That can trigger in a wrong way. So, but that comes after long experience, right? For the beginners who just started learning, they don't have idea about the group discussion, right? They actually speak 5-10 sentences and they stop, right? And they Because should also ask questions. they should ask question, but actually they're not well prepared. They don't have much stuff in their mind. They don't have more words, sentences. Using that, they can ask question. They can speak more, right? So we just the main objective behind talking to you, my all online students, whether it's a YouTube, Facebook, Instagram, they should understand, like they should participate more in debate. But before that, first step preparation, second step practice, and third step participation. And then after asking the question, it's the fantastic key to continue your discussion. तो ये कुछ group discussion के हमारे दोनों experts के साथ हुआ. Very good speaker, regularly participate in debate and they always prepare fantastically. So I also suggest you prepare and start participating in debate, guys, and start learning. You can watch our previous videos where they have discussed a lot, I think, on the various topics. So you can watch those videos and improve. We just hope that you should improve